अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, लाइव फोन इन इंटरैक्टिव प्रोग्राम टेली क्लासरूम के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रसूल और मैं हूं आपकी दोस्त हया। नाज़रीन, आज जिस सब्जेक्ट पे हम बात करने वाले हैं वो है मैथमेटिक्स एंड द टॉपिक व्हिच वी हैव चोजन फॉर डिस्कशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। In algebra, quadratic equation refers to any equation of the form ax square plus bx plus c is equal to 0, where x is the variable, a, b and c are constants and a is not equal to 0. जी बिल्कुल हया, आप इसे मैथमेटिक्स कहिए, गणित कहिए, इल्म हिसाब कहिए, इल्म रियाजी कहिए, इसी पे आज एक लेक्चर डिलीवर होगा और टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और इसी टॉपिक पर लेक्चर डिलीवर करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियोज़ में मदऊ किया है गुलजार अहमद डार साहब को। गुलजार अहमद डार साहब के बारे में मैं ये बता दूं कि ही इज़ अ मास्टर कम्युनिकेटर, एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर है और इससे पहले भी एक दो दफ़ा यहाँ आए हैं और बहुत अच्छे मास्टर पीसेस रहते हैं इनके लेक्चर्स। और ये पोस्टेड है एज लेक्चरर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल मागाम। सर, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू इन टुडेज टेली क्लासरूम। होप यू वुड हैव अ ग्रेट वन। एंड देन फॉर सब्जेक्ट एक्सपर्ट वी हैव अनदर डॉयन ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग, मिस्टर अब्दुल रशीद जरगर, हु इज करंटली पोस्टेड एज जोनल एजुकेशनल ऑफिसर टंगमर्ग। सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू इन द प्रोग्राम। इनके बारे में मैं ये बता दूं कि ये मुसन्निफ भी रह चुके हैं। इल्म हिसाब को जो पढ़ाने के बारे में कुछ किताबें इन्होंने लिखी है, जैसे एक किताब इनकी आई थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, और एक और किताब इनकी बस आने ही वाली है मैथमेटिक्स लर्निंग। सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू इन द प्रोग्राम। इन द लेटर हाफ ऑफ द प्रोग्राम यू वुड बी इन द फायरिंग लाइन बिकॉज द व्यूअर्स वुड बी पोजिंग ऑल दोज ट्रिवियल एंड नॉट सो ट्रिवियल क्वेश्चंस दैट वी रिलेट टू मैथमेटिक्स। दे वुड बी पोज्ड टू यू एंड यू विल बी आंसरिंग ऑल दोज क्वेश्चंस। And besides, let's welcome all the students in our studio. यस तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो शुरू करते हैं, वो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा। ख्वातीन व हज़रात, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है प्रोग्राम टेली क्लासरूम में। और ये बताते चले कि ये प्रोग्राम आप तक डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन और दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के बाहमी इश्तराक से पहुंचाया जाता है। और जहां तक हमारे रिपीट टेलीकास्ट टाइमिंग्स है उनमें थोड़ी तब्दीली आई है। अब आप हमारे प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट देख सकते हैं हर मंगलवार, यानी कि एवरी ट्यूसडे फ्रॉम 9 PM to 10 PM एंड एवरी थर्सडे फ्रॉम 9:10 to 10:10 AM। तो ये थी तब्दीली थोड़ी बहुत जो कि रमजान मुबारक की वजह से आई है हमारे रिपीट टेलीकास्ट की टाइमिंग्स में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। मिस्टर गुलजार अहमद डार साहब, मास्टर कम्युनिकेटर, हैव अ ग्रेट वन। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमने आपके लिए मैथमेटिक्स का टॉपिक चूज किया है, जैसा कि अभी आपको पता चल गया है, ये टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इससे पहले कि हम डेफिनेशन पे जाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जब हम रियल लाइफ में देखते हैं, हर रोज हम किसी न किसी ऐसी प्रॉब्लम के साथ हमारा वाबस्ता पड़ता है जिसके सॉल्यूशन के लिए हमें मैथमेटिक्स की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि अगर हम देखें, कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है हमारे पास और ये दिया गया है कि इसकी लेंथ जो है इट इज़ ट्वाइस द ब्रेड्थ एंड इट इज़ गिवन दैट इट्स एरिया इज़ 50 स्क्वायर centimeters or 50 square meters. So if we are supposed to find out its length and breadth, how we can find out its length and breadth? We will discuss about it, but quadratic equation की definition से पहले एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये कि जब भी हम देखते हैं अगर कोई आप में से कोई फैक्ट्री चला रहा है या कोई बड़ी इंडस्ट्री चला रहा है और उस इंडस्ट्री में उसके लिए लेबर की ज़रूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिससे वो कोई प्रोडक्ट फिर लाता है बाज़ार में। और ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए, ऐसे रॉ मटेरियल्स के लिए हमें चूज करना पड़ता है कि कितना रॉ मटेरियल, कितना लेबर, कितनी इलेक्ट्रिसिटी और कितना एक्सपेंडिचर हम करें ताकि हमारा जो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम हो। इसको हम ऑप्टिमम सॉल्यूशन कहते हैं। ऑप्टिमम सॉल्यूशन मतलब कितना लेबर हम यूज करें, कितना हम रॉ मटेरियल यूज करें ताकि हमारा जो प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम आए। ऐसी सिचुएशंस को हम
ऑप्टिमम प्रॉब्लम्स कहते हैं और ऐसे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को हम ऑप्टिमम सॉल्यूशंस कहते हैं। एक और प्रॉब्लम आपके साथ में डिस्कस करना चाहूंगा। अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूंगा या नाजरीन से सवाल पूछूंगा, अगर आपको मैं एक नंबर देता हूं और नंबर को इसके रेसिप्रोकल के साथ ऐड किया जाए और सम जो है, टोटल सम जो है, अगर वो 10/3 आ जाए, तो अगर मैं आपसे पूछूंगा वो नंबर क्या है, क्या आप बताएंगे? आई रिपीट माई क्वेश्चन। A number is added to its reciprocal and the total sum becomes 10/3. Can you guess what is the number? Okay, we'll discuss it later. First of all, we come to the definition of quadratic equation. As Haya rightly said, it is any equation which can be expressed in this form: ax plus b, ax square plus bx plus c equal to 0. But is this a quadratic equation? You have already learned this you have learned something about quadratic equation in 9th class. Is this a quadratic equation? Yes, sir. Yes. Is this? Yes. Mehak, please stand up. Is this a quadratic equation? Yes, sir. I think it is not a quadratic equation. Why, sir? Something is missing there. The constants. Everything is there, constant is there, ax square is there, bx is there, c is there, equality is there, 0 is there, but I claim that it is not equal to 0. Yes, that is what is missing here. Yes, if we take a is equal to 0, then it ceases to be a quadratic equation. Yes, sir. Therefore, you must write here that A is not a equal must to not 0. be equal to 0, because if we take, sit down please, if we take a is equal to 0, then it ceases to be a quadratic equation. ओके, ठीक है। तो जब भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज एनी इक्वेशन विच हैज 2 as it is degree, or you can say any equation with degree 2 is called a quadratic equation. You must be knowing about the linear equation. What is linear equation? Any equation of degree 1. Any equation which has degree 1. Then what is cubic equation? Degree 3. Degree 3. What is fourth degree equation? Degree 4. And we call the fourth degree equation as biquadratic equation or the quartic equation. What is the equation of fifth degree called? 5 degree equation. You don't know. Quartic equation. Or you can call it the fifth degree equation or the sixth degree equation and the sixth degree equation. Let me tell you one interesting thing, that so far, right till date, only mathematicians are able to find out the solutions up to the biquadratic equation. आज तक कोई ऐसा mathematician पैदा ही नहीं हुआ है जो fifth degree equation का जो solution है उसके लिए formula ढूंढ पाए। आपके लिए open field है, आप ढूंढ सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि fifth degree equation या इससे ज्यादा equations जो है, इससे ज्यादा वाली degrees की equations जो हैं, उनके लिए कोई particular formula नहीं है जिससे हम इसका solution निकाल पाएंगे। ठीक है, ये तो थी डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद जब हम सॉल्यूशंस की बात करते हैं, हम डायरेक्ट आते हैं सॉल्यूशंस पे। जैसा कि हया ने भी कहा, एनी इक्वेशन व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c equal to 0, but the condition here is a must not be equal to 0. Why? Because then it would cease to be a quadratic equation. If we will take a is equal to 0, then this whole term will be equal to 0. Then there remains bx plus c, which is of course a linear equation. ठीक है? Okay. जब हम इस x की बात करते हैं, x को हम वेरिएबल कहते हैं और a, b, c को हम कॉन्स्टेंट्स कहते हैं. If we are supposed to find out the value of this x, the value of x which satisfies this equation or which makes left hand side equal to the right hand side is called the root of the quadratic equation. So if we are to find out the roots of the quadratic equation, that means we have to find out the values of x. In 9th classes you must be knowing about the different methods for finding the solution of this quadratic equation. Do you know any method? So factorizing is there. Let me ask this question to that very student. Jamila, please stand up. Okay. How many methods are there to solve the quadratic equation? Sir, there are 3 methods to solve the quadratic. There are 3 methods to solve the quadratic equations. 3 methods. First number one one is factorization method. Factorization method. Number 2. Completing square method. Completing square method. Third is
quadratic formula. Third is quadratic formula. Any other method? सर मुझे बस यही तीन No, पता no, है. there is no. But because आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ यही थी, बैठिए प्लीज, आपके सिलेबस में जो है वो सिर्फ 3 मेथड्स हैं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ मेथड्स हैं जिनको हम ग्राफिकल मेथड्स कहते हैं, जैसा कि 4th मेथड है लिल्स मेथड. Lil's method. It is a graphic method. We will try to discuss about this Lil's method later on. लेकिन जब हम बात करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड की, पहले हम बात करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड. इस फैक्टराइजेशन मेथड से हम पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने की कोशिश करते हैं. क्या करते हैं? फैक्टराइज. फिर फैक्टराइज करके हम फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं. लेट मी टेल यू हाउ. जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x² plus 5x plus 6 equal to 0. This is a quadratic equation because instead of a, here we have taken 1. Instead of b, here it is 5. Instead of c, we have 6 equal to 0. How can it be factorized? हम इसको factorize कैसे करते हैं? पहले हम factorize करते हैं splitting the middle term. You must be knowing about it because you have already gone through this topic in 9th class. Yes, how we factorize it? How we split middle term? 2x plus 3x plus 3. How we split it? The product must be equal to 6x square. पहले हम इन दो को मल्टीपल करते हैं, इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करते हैं, उनका प्रोडक्ट जो है वो 6x इसके प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, और जो इस मिडिल टर्म का सम या सब्ट्रैक्शन होना चाहिए वो इसके बराबर होना चाहिए. सो व्हाट डू यू सजेस्ट फॉर दिस? 3x plus 2x Okay, we can write it x square plus 3x plus 2x plus 3x plus 3x plus 6 plus 6 equal to 0. Why we cannot take like this x square plus 4x plus 1x plus 6 equal to 0? Their product Is this is the not correct equal. split? No, sir. Why? Their product is not equal to 6x. Because the product must be equal to 6. So we take 2x plus 3x. If we make product of these two terms, 2 into 3 becomes 6. Clear? Okay. Now what is the second step? We take x out of these two terms. X square, then it remains x plus 2. We take 3 out of these terms. And it Remains x plus 2 equal to 0. We take x plus 2 out of these two terms. It becomes x plus 2 into x plus 3 equal to 0. Now here the product of two numbers is 0. Let me repeat it. Product of two numbers is 0. What can you say about the two numbers? One number is equal to Minus 2 and minus 0. No. What my question is, if we have the product of two numbers, a is a number or the x is a number, y is another number, and the product of two numbers x and y is 0, what can you say about x and y? at least one number must be equal to At 0. least one number must be equal to 0. जब भी हम दो नंबर्स का, दो रियल नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं और जब प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तो दो नंबर्स में से एक नंबर जरूरी 0 होना चाहिए, लेकिन ये हमेशा नहीं होता है. हायर मैथ में जब आप थोड़ा सा हायर क्लासेस में जाएंगे वहां कुछ मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जैसे कि आपके सिलेबस में नहीं है, जैसे कि मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट है हायर मैथमेटिक्स में. वहां पे जब आप दो मैट्रिसेस का मल्टीपल करेंगे वो 0 हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि a भी 0 हो और b भी 0 हो. यानी a भी नॉन 0 हो सकता है, b भी नॉन 0 हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट b उस सूरत में 0 हो सकता है. बट whenever we talk about the real numbers, when the product of two real numbers is 0, then one of the two numbers must be equal to 0. So this is how we factorize it. So either this must be equal to 0 or this must be equal to 0. That means either x plus x plus 2 must be equal to 0 or x plus 3 must be equal to 0 or x must be minus 2, x must be minus 3. These are the two solutions of this quadratic equation. Let us discuss another method of factorization. Have you gone through any geometrical method of factorization? No, sir. No, because you have not learned it in 9th class. Let us today discuss how to factorize the same quadratic equation geometrically. Are you ready?
Are you ready to listen it? Are you ready to learn it? Yes. Okay. Today we are going to learn something new which you are not aware about. Let us start from this. What is this? X square. X square. We take a square. A square, you know? Yes, sir. All sides sides equal. equal. We take a square whose length is x. Whose length is X. x. Since it is a square, so its breadth will be We equal also to x. x. एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा गॉसिया से, ठीक है? What is the area of this square? X square. Good, because length into breadth, length into length, it will be x square. X square. You got it? Okay. इसके बाद मैं एक स्ट्रिप बनाता हूं ऐसे, and I take its height, or you can say length, equal to x, and its breadth equal to 1. So its area will be equal to x into 1. That is X. X. Very good. If I make such 5 strips, this is second one, this is third one, this is fourth one, this is fifth one. So what is the area of first strip? X. X. What will be the area of second strip? X. X, 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 X. How many times X? 5 times 5 times X. I can write it 5X. times X. What was the first term? X square. X square. What is the second term? 5x. 5x. I converted this expression in terms of area. X square, because its area is x square. Its area is 1x, 2x, 3x, total 5x. And third step is I make small strips of unit length, small squares of unit length. Let's start with this. If I take its length 1, breadth 1, what will be its area? 1. 1. Good. If I take another such square, what will be its area? 1. 1. Again, another. 1. 1. Good. Another square. 1. 1. I take 6 such squares. 6 such squares. Can you tell me what is the area of 1 square? 1. What will be the area of 6 squares? 6. 6 into 1, that means 6. So I converted this algebraic expression x square plus 5x plus 6 into this geometrical figure. A square whose area is x square. 5 rectangular strips whose each area is x. Each of whose area is x. And what will be the area of 5 strips? 5x. And unit squares, what will be the area of 6 such unit squares? 6. Now I amalgam these all strips. I write like this. This is x square. I write it like this. Dhyan rakhiye, your attention is highly needed here. What is its length? X. Good. Its breadth x. I take 3 strips like this. This is first strip, this is second strip, this is third strip. You got it? Yes, sir. Okay. So 3 strips are gone. How many strips are left there? 2. मैं इनको ऐसे जोड़ता हूं अब. 1 मिनट, इससे पहले मैं जोड़ूं. यहां से यहां तक है x. What is the breadth of this strip? 1. So what will be the length of this? Breadth of this? 1, 1, 1. Total length? 3. Plus 3. So what is length from here to here? X plus 3. Good. X plus 3. This will be x plus 3. Now ये जो 2 strips रह गई हैं इनको मैं ऐसे जोड़ता हूं. ठीक है? So what is the breadth of this strip? 1. This is 1. What is the total length? X plus 2. Good. X plus 2. So the remaining 6 unit squares I put like this. This is first square. This is second square. This is third square. This is fourth square. This is fifth square. This is sixth square. So can you tell me what is the area of this figure? Length into breadth. X plus 3. What is into its X length? plus 3. X plus 3. X plus 3. Into What is X its plus breadth? X plus 2. So I can write this geometrical figure algebraically as x plus 2 into x plus 3. So ये जो सारा area हमने amalgam किया,
एक साथ जोड़ के लिखा, इसका टोटल एरिया बन जाता है x+2 इंटू x+3। तो ये जो सारी फैक्टराइजेशन थी x² + 5x + 6, आई कैन राइट इट, क्योंकि जब इस सारे का एरिया इस एरिया के बराबर निकला तो मैं लिख सकता हूं इट इज x+2 into x+3. x+3। आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऐसे फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन किसी ने ऐसा सवाल पूछा नहीं। मैं यहीं से सवाल पूछूंगा और आप जवाब देंगे, या आप ही पूछिए। नहीं, आपके जहन में ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन मेरे जहन में। क्यों स्क्वायर लेते हैं वहाँ पे? कहाँ पे? वहाँ पे रेक्टेंगल क्यों नहीं हम पहले लेते हैं, बाद में स्क्वायर लेंगे? यहाँ पे। हाँ। गुड। आप फिर से सवाल पूछिए माइक पे। हम क्यों पहले स्क्वायर लेते हैं बाद में रेक्टेंगल? हम पहले क्यों नहीं रेक्टेंगल लेते हैं बाद में स्क्वायर्स? जब हमारी एक्सप्रेशन x² + 5x + 6 है, तब आप ले सकते हैं पहले स्क्वायर। अगर पहले 5x ही हो, फिर x² हो, फिर 6 हो, = 0, फिर आप लेंगे पहले ही 5 स्ट्रिप्स, फिर आप लेंगे x², फिर आप लेंगे 6। आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में कभी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी देखी होगी, 6 + x² + 5x = 0, 5x = 0. So you arrange it as per the decreasing order of the powers. Yes, sir. You got it? If x is x³ + x² + 5x + 6 = 0, then what we take? Good. Nice question. जब भी हम क्यूब की बात करते हैं, बैठ जाइए, जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ एरिया। जब हम क्यूब की बात करते हैं, क्यूब्स पे हम क्यूब इज द यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। जब हमें 3 डिग्री, 3rd डिग्री इक्वेशन की फैक्टराइजेशन करनी है, तब हमें एरिया का सहारा नहीं लेना होगा, तब हमें वॉल्यूम का सहारा लेना होगा। ठीक है। इसीलिए हम स्क्वायर लेते हैं, क्यूब नहीं लेते हैं। क्यूब इज द unit of volume. You got it? Yes, sir. Okay. This is how we factorize the equations, quadratic equations geometrically. You got it? Yes, sir. Okay. इसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से आपके लिए। ये जो मैंने quadratic equation factorize की geometrically, क्या हम हर किसी quadratic equation का geometrically ऐसे factorization कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? What is your answer? नहीं कर सकते, मुझे नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। Yes. Yes. No. कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? Yes or no? No. 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 Why no? Why not yes? Yes. I will tell you why not no. It is dependent on the discriminant of the quadratic equation. When we write quadratic formula, आपके सवाल का या अपने ही सवाल का मैं अभी जवाब देता हूं खुद ही। जब हम लेते हैं quadratic equation ax² + bx + c, हम quadratic formula की, जैसा कि अभी जमीला ने कहा, we can solve it with the help of quadratic formula. Quadratic formula is x = -b + -√b² - 4ac divided by 2a. 2a. This is called the discriminant. b² - 4ac. When this discriminant, with the help of this discriminant, we can discuss the nature of the roots of the quadratic equation. Nature of the roots of the quadratic equation. Nature of the roots of the quadratic equation means whether the roots are positive, whether roots are negative, whether roots are real, whether roots are imaginary or complex roots. If this discriminant is positive, then the equation has a real and unequal roots. मैं आपको समझाऊंगा कैसे। मैंने आपके लिए एक चार्ट बनाया है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है हमेशा एक पैराबोलिक शेप में आता है। जब हम बात करते हैं b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट की, और जब ये डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, तब आपका जो ग्राफ जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, वो ऐसे बनेगा। मैं आपको इस पॉइंटर से दिखाऊंगा, वो ऐसे बनेगा, पैराबोलिक। लेकिन ये जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को 2 जगह पे इंटरसेक्ट करेगा।
क्या करेगा? दो जगह पे इंटरसेक्ट, एंड दीज टू पॉइंट्स विल बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एंड it happens only when we take discriminant greater than 0. If the discriminant is equal to 0, the second case, when the discriminant is equal to 0, then the roots are real and equal. Roots are real and equal. And geometrically speaking, when the roots are real and equal, the graph of the quadratic equation will be something like this, and it will be touching the x-axis at one point, and that point will be the root of quadratic equation. You got it? Yes, sir. And third case is when discriminant is less than 0, then what will happen to the quadratic equation? It will have complex roots. Complex roots, the roots which will not be on the real axis, जो real axis पे नहीं होंगे, फिर होंगे कहाँ? मैं आपको समझाऊंगा ग्राफिकली. तब उस सूरत में जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा, when discriminant is less than 0. जरूरी नहीं है कि y axis को ही इंटरसेक्ट करेगा, ग्राफ ऐसे भी बन सकता है या इस क्वाड्रेंट में भी बन सकता है, लेकिन उस सूरत में ये एक्स एक्सिस को या रियल एक्सिस को टच नहीं करेगा. और जब ये टच नहीं करेगा रियल एक्सिस को या एक्स एक्सिस को, और उस सूरत में रियल रूट्स नहीं होंगे, तब होंगे कॉम्प्लेक्स रूट्स. और कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको 10th में नहीं है, वो 11th में जब आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे 11th में है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का कॉन्सेप्ट, और आयोटा का कॉन्सेप्ट वो आप वहीं पे पढ़ेंगे. ठीक है? तो हम बात कर रहे थे नेचर ऑफ द रूट्स की. ये है दो मेथड्स, फैक्टराइजेशन और क्वाड्रेटिक फार्मूला की. मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप मुझे बताइए पहले, जब हम एक रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में डालेंगे और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की लैंग्वेज में डालेंगे और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है? मैं आपसे सवाल पूछूंगा और जिसको पता होगा वो सिर्फ हाथ खड़ा करे. ठीक है? सवाल ऐसा है, when a number is added to its reciprocal, सुना आपने? When a number is added to its reciprocal, total sum becomes 10 by 3. मैं लिखूंगा a number plus its reciprocal 1 by number becomes 10 by 3. Can you tell me what is the number? X plus 1 by x. But what is x? हाँ, ये खड़ा हो जाए. पहले नाम बताइए अपना. My name is Tawhida Nisar. फर्स्ट हम क्या लेंगे? फर्स्ट नंबर x और इस... आप यहाँ पे आ जाइए प्लीज. माइक साथ ले आइए, माइक साथ ले आइए. मैंने जो सवाल पूछा आपके लिए, हाँ यहाँ पे रहिए. हाँ, मैंने जो सवाल आपके लिए पूछा, a number is added to its reciprocal, total sum becomes 10 by 3. How we can write it mathematically? How we can represent it mathematically? क्या आपने बोला? x plus 1 by x is equal to 10 by 3. क्या x plus 1 by x? थोड़ा सा पहला नंबर हम लेंगे x और दूसरा ले इसका रेसिप्रोकल है 1 by x. या आप बता सकते हैं कैसे? गुड. बस ठीक है. गुड, थैंक यू. तौहीदा ने कहा कि पहला नंबर जो है हम लेंगे x, इसका रेसिप्रोकल जो है वो होगा 1 by x. हम लिखते कैसे हैं? लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू x, एंड सिंस सेकंड नंबर हैज टू बी द रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट नंबर, सो हम सेकंड नंबर जो लेंगे, second number is 1 by x. 1 by x. By the condition of the question, the sum of the number and its reciprocal is 10 by 3. what? 10 by 3. 10 by 3. So number plus its reciprocal is 10 by 3. So x plus 1 by x is equal to 10 by 3. आप रेडी रहिए इसको सॉल्व करने के लिए. So this is x square plus 1 divided by x is equal to 10 by 3. You got it? Yes, sir. Okay. Let's cross multiply it. This becomes 3 into x square, 3x square
plus 3 equal to 30. equal to 10x. You got it? Yes, sir. This is 3x square minus 10x plus 3 equal to 0. This is how we convert the real life situation, real life problem into what? Mathematical language, into quadratic equation. So now how can you solve this quadratic equation? कोई मुझे बताएगा कैसे? Factorization. कोई भी मेथड है, फैक्टराइजेशन है, कंप्लीटिंग स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है और लिल्स मेथड है. विल बी डिस्कसिंग अबाउट इट लेटर ऑन. बट कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिट कर. स्प्लिट मिडिल टर्म, ठीक है. और इसका सोल्यूशन जो है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं. कैसे? इन दो को मल्टीपल करके 9 और 10 को मल्टीपल 10 को दो टर्म्स करके, दो हिस्से करके उनका प्रोडक्ट जो है वो क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए. ठीक है. सो कैन यू गेस व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन? -9 plus 3 and 1. Why 3 and 1? 9 and 1. 3 and 1. Then 3 must satisfy it and 1 must satisfy it. Okay? What is the solution? You just said that its solution is 1. Then 1 must satisfy it. 10 into 1 means 3. 3 into 1 means 3. 10 into 1 means 10. 3 plus 3 is 6. Minus 10, that is not equal to 0. 3 is the correct solution. And it may have another solution, वो भी आप ढूंढ सकते हैं. This is how we solve the quadratic equation. First of all, how we mathematize, how we convert real life situations into mathematical language, into quadratic equation. Then we can solve it easily. You got it? Yes, sir. You got it? Okay. Now another problem. You write, please. We have a rectangle. It is given that the length is twice its breadth. Length is twice its breadth. In the same fashion, let's take breadth as x. Since length is twice its breadth, so what we take its length? 2x. 2x. If its area is 50 centimeters square, can you tell me what is the value of x? Yes. I repeat my question. Length of a rectangle is twice its breadth and total area of this rectangle is 50 centimeters square. What is the length and what is the breadth of this rectangle? Breadth will be 5. Yes? 5. थोड़ा ऊंची आवाज में. Breadth will be 5. Breadth will be 5. That means x will be 5. 5. So what will be its length? 10. 10. Length will be 10. आपने किया कैसे इसको? फिर इसको मैंने पहले भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हाँ. किया. X is length, x is breadth, 2x. 2x is length. Since its area is length into breadth is 50. So this is 2x into x is equal to 50. 2x square is equal to 50. So x square is equal to 25. X is equal to 5. You can find out this 2x or length is equal to 10. Twice breadth. You got it? Yes. This is how we mathematize, how we write real life situations into mathematical equations or quadratic equations. Now, as I just told you that another method is Lil's method for the quadratic method, for solving the quadratic equation. It is a practical one. It is a new method for you because it is not mentioned in your syllabus. But there are certain board books where this method is also mentioned in the syllabus of so many board syllabus. So let's try to discuss about the Lil's method. I have made a chart of Lil's method, but first of all let me introduce how to proceed. I will give you the procedure of Lil's method. If we are given the quadratic equation ax square plus bx plus c equal to 0. You got it? Okay. Now here are three constants a, b and c. I take length of a as this. This is a. B as this. This is b. And c like this. This is c. What we are discussing about?
Lil's method. This is another method for solving the quadratic equation. This is a geometrical one and practical one. It needs practical lab and practical lab के बगैर इसको solve नहीं किया जा सकता है. तो हमने जो variables लिए या constants लिए इसके A, B, C और A, B, C को जब हमने लिया एक 3 sides लिए एक open figure ली A, B और C. फिर हम join करते हैं A और इसको मैं लेता हूं A, B, C and D. I join A with D. फिर हम लेते हैं A और D को हम डायमीटर लेके एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. ये जो सर्कल है ये इस बेस लाइन को 2 पॉइंट्स पे टच करती है. अगर ये 2 पॉइंट्स पे टच करती है देन द डेफिनेटली डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0. तब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 डिफरेंट सॉल्यूशंस हो सकते हैं. मैं इसका x1 लेता हूं, इसका नाम x2 लेता हूं. अगर ये सिर्फ टच करता है ये सर्कल इस लाइन को तब एक ही रूट हो सकता है या 2 रूट्स हो सकते हैं और कॉमन रूट हो सकता है, वो इक्वल होंगे. अगर ये टच बिल्कुल भी नहीं करता है तब रियल रूट्स नहीं होंगे. So what is as per the Lil's method the solution of this quadratic equation will be x equal to bx1 this length divided by BA, this length divided by this length, and second solution will be x equal to BX2 this length divided by AB. This is how to find out the solution of quadratic equation with the help of Lil's method. And another method is completing the square. You must be knowing about it because you have already gone through this factorization in or the completing square in 9th. So these were the methods of factorization, quadratic formula and Lil's method. कभी time मिला वो जो factorization है या completing square है उस पे भी discussion करेंगे और discussion के बाद जब हम कभी और मौका मिला उसके जितने भी आगे मेथड्स हैं वो भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एक एग्जाम्पल के साथ हम एंड करेंगे अपने लेक्चर का. अगर हम यहाँ पे जब हम आए अपने घर से, अगर हमारी गाड़ी जो है किसी एक सर्टेन स्पीड के साथ चलती है और हमने यहाँ तक 25 किलोमीटर या मान लीजिए 100 किलोमीटर का सफर किया घर से लेके यहाँ तक. ठीक है, अगर हमारी स्पीड हमने जो स्पीड अडॉप्ट की या स्पीड अख्तियार की अगर हमारी स्पीड इससे ज्यादा होती तो हमें कम टाइम लगता या ज्यादा टाइम लगता? कम टाइम लगता. मान लीजिए हमने 100 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की है फ्रॉम आवर होम टू दूरदर्शन. ठीक है, तो जब ये 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है अगर हमारी स्पीड x है तो हमने टाइम और डिस्टेंस आपको पता है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की फॉर्मूला क्या है? वो s is equal to 3 by t. Yes, Speed is equal to distance by time. Distance divided by Time. So if we take x, what will be time then? Time will be distance divided by speed. speed. ठीक है, तो if we take 100 as distance and speed as x, this is the first condition. Time taken will be 100 by x. If we change our speed, अगर हमारी स्पीड इससे ज्यादा होती से x plus 10 किलोमीटर्स पर आवर तो हमारा जो टाइम है वो कम लगता. कितना कम लगता? हमारा टाइम उस सूरत में होता टाइम इज इक्वल टू 100 डिस्टेंस उतनी ही होती लेकिन जो स्पीड है x plus 10. दिस इज द टाइम टेकन इन सेकंड केस. इसको अगर हम कोशिश करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फॉलो करने या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सांचे में डालने की वो आसानी से कर सकते हैं. इन टाइम इन दो का जो डिफरेंस है इन दो टाइम्स की जो डिफरेंस है वो हम डिफरेंस करके हम बता सकते हैं कि कितनी देर से हम पहुंच सकते हैं या कितनी अर्ली हम पहुंच सकते हैं. ठीक है, दिस ऑल्सो कैन बी सॉल्व्ड विद द हेल्प ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. थैंक यू वेरी मच for listening me so patiently. Thank you very much listeners and thank you very much viewers. Thank you very much students. This was all for today's lecture. Thank you very much. शुक्रिया गुलजार अहमद डार साहब, इस उम्दा से लेक्चर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. और एक बहुत अच्छे कम्युनिकेटर तो आप है ही लेकिन उसके अलावा a wonderful demonstration of how to mathematicize real life problems and he literally proved that every real life problem can be
mathematicized and it can be solved in a mathematical manner. तो नाजरीन, अब प्रोग्राम का वो दिलचस्प मरहला आ चुका है जब हम आपके साथ जुड़ते हैं या आप हमारे साथ जुड़ते हैं, और जो टेलीफोन नंबरात है वो है 2481813, जी हाँ 2481813, और दूसरा टेलीफोन नंबर है 2481832. प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रीफिक्स 0194 इन केस यू आर कॉलिंग फ्रॉम आउटसाइड द jurisdiction of district Srinagar or in case you are calling from your respective cell phones. और एक और चीज ये कि जब आप क्वेश्चन करें, you have to complete the question within the stipulated time of 1 minute, and please tune down the volume of your television sets while you make the call to us. तो चलिए कॉलिंग का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद. ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर से हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया. हम ले रहे हैं आपकी कॉल्स ऑन द नंबर्स 2481813 और 2481832, और एक लाइव फीड ऑफ ईमेल्स भी है जो आप हमारे पास पहुंचा रहे हैं ऑन द ईमेल एड्रेस विच इज़ ddkteleclassroom@gmail.com. जी हाँ, ddkteleclassroom@gmail.com. आप इस पर मेल कीजिए एंड विल रीड इट ड्यूरिंग द लाइव ट्रांसमिशन ऑफ दिस लाइव प्रोग्राम. और कुछ ईमेल्स ऑलरेडी है सर हमारे पास. ये अशफाक हाफिज साहब लिखते हैं हमें दानपुरा ब्रेन निशाद से, कहते हैं काफ़ी उम्दा प्रोग्राम था आज का, और जिस तरीके से सर ने पढ़ाया काफ़ी सराहा है आपके लेक्चर को सर. और दूसरा ईमेल हमें आया है रमीज़ अहमद साहब से, श्रीनगर से लिखते हैं, कहते हैं वेरी नाइस प्रोग्राम बाय दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर. इट नीड्स एडवर्टीजमेंट एट एवरी लेवल, इट नीड्स एप्रिशिएशन एट एवरी लेवल. थैंक्स अ लॉट फॉर प्रोड्यूसिंग सच अ वंडरफुल प्रोग्राम. गुलजार अहमद डार साहब, आपने लेक्चर के स्टार्ट में बात करी थी कि वी कैन मैथमेटिसाइज एवरी रियल लाइफ प्रॉब्लम. तो ये एक तरीका जो है बेसिक्स को पढ़ाने का मैथमेटिक्स के हवाले से, कितना उम्दा समझते हैं आप कि बेसिक से ही आप समझाइए रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को आप मैथमेटिसाइज कर सकते हैं? मुझे लगता है जब हम डायरेक्टली कोई ऐसी प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में सॉल्व करते हैं तो स्टूडेंट्स फील एज इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अल्फा एंड वो बीटा के मुतलिक कर रहे होते हैं. लेकिन जब हम रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटिक्स के लैंग्वेज में डालने की कोशिश करते हैं और रियल लाइफ सिचुएशन को मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जब हम डालते हैं फिर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम्स, तो स्टूडेंट के जहन में ये बैठ जाता है कि हम व्हाट एक्चुअली वी आर डीलिंग विद. एग्जैक्टली. वेल, थैंक्स अ लॉट फॉर दैट ब्रीजी आंसर. सर इतना ही नहीं, ये जो बच्चे सोचते हैं कि ये जो मैथ है रफ एंड टफ सब्जेक्ट है, ये डरते हैं इससे, भाग जाते हैं इससे. जब हम इसको रियल लाइफ से मतलब कनेक्ट करेंगे, इसको ये इंटरेस्टिंग बनता है, बच्चों को इंटरेस्ट बनेगा और समझ भी आएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स वो समझ भी आएंगे, वो अंडरस्टैंड भी करेंगे. इतना ही नहीं बल्कि ये इंटरेस्टिंग बन जाएगा, वो बाद में ये नहीं कहेंगे ये रफ एंड टफ सब्जेक्ट है. शुक्रिया इस जवाब के लिए. जीएम खान साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ बड़गाम से. अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में. वालेकुम अस्सलाम. जनाब, मुझे टीचर से कुछ चीजें बतानी है. नंबर 1, मैथमेटिक्स का जो उसूल है जी, टीचिंग का भी, अननोन टू नोन फैक्ट्स. इसे शुरू किया क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ही डिडंट डिफाइन व्हाट इज एन इक्वेशन, ही डिडंट डिफाइन व्हाट इज ए पॉलिनोमियल. इस तरह निकाले जाते हैं. ही स्टार्टेड फ्रॉम प्रैक्टिकल एग्जांपल. नंबर 1. नंबर 2, इट इज बेस्ड ऑन लॉजिक. मैथमेटिक्स इज बेस्ड ऑन लॉजिक. हाउ टू डिराइव द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्यूशन, उसका भी कुछ नहीं बताया. ऐसा लगता था कि दिस जो भी इन क्लास है ये ऑलरेडी उनको पता था. अच्छा. एंड ही रिपीटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सोल्यूशन किस तरह की जाती है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है. ही डिडंट डिफाइन व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट. जी शुक्रिया. इस सवाल के लिए आपका सवाल अब तक पहुंच चुका है. सर जवाब देंगे इसका. सर इनके हिसाब से आपने जो गाड़ी है ना वो सेकंड गियर में स्टार्ट कर दी. इनका कहना सही है. अगर ये इन्होंने पहले हमारा जो इससे पहले लेक्चर हुआ था लीनियर इक्वेशंस पे, उसमें हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल्स पे बात की है और वेरिएबल से स्टार्ट किया था, क्योंकि ये हमारा डायरेक्ट टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो डेफिनेशन से स्टार्ट किया है और उसके सॉल्यूशंस पे हमने एंड किया है. और रही बात इनकी वेरिएबल से पहले स्टार्ट करना था. अगर हम उससे पहले हमने ऑलरेडी वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स पे और पॉलिनोमियल्स पे ऑलरेडी लेक्चर डिलीवर किया है, अगर इनने वो देखा होगा तो जहां तक इनके सवाल का ताल्लुक है, अगर हम वो करते तो सारा लेक्चर उसी में जाता. वेरिएबल डिफाइन करने या पॉलिनोमियल तक पहुंचते पहुंचते वो लेक्चर उसी में डिलीवर होता. सिंस वी वर सपोज टू
discuss about the quadratic equation. So we started from the quadratic equation definition. शुक्रिया एक बात इसके लिए मैं ये बताऊंगी, जो हमारे पास स्टेटमेंट्स होते हैं, 3 किस्म के स्टेटमेंट होते हैं। ट्रू स्टेटमेंट होता है, फॉल्स स्टेटमेंट होता है, ओपन स्टेटमेंट। मसलन मैथमेटिक्स में 3 + 4 = 7 ट्रू स्टेटमेंट है, 7 + 3 = 9 फॉल्स स्टेटमेंट है। और जब x + 3 पर हम पहुंचते हैं, x + 3 = 5, इट इज ओपन स्टेटमेंट। हियर वी यूज अननोन x, which is in mathematical language we call is a variable. Until and unless we will not know the unknown number, we can't say the statement is true and false. जहाँ तक इक्वेशन की बात है, it is said, this equation is defined like this: all the open statements which are connected by the sign is equal to is called in equation. Similarly, the true statements connected by sign is equal to is called in equality, and open statements connected by greater than, less than, greater than or equal to, or less than or equal to is called in inequation. तो जहां तक इक्वेशन सॉल्व करने की बात है, अगर ये ax² + bx + c का इक्वेशन सॉल्व करता है जिस तरह ये फरमा रहा है, तो एक पीरियड उसी के इस बारे में और भी बात होगी, बट आई वुड रियली अप्रिशिएट बोथ द टीचर एंड द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। द आंसर विल बी अ लिटिल ब्रीफ बिकॉज़ वी हैव सो मेनी कॉलर्स ऑन द लाइन राइट नाउ। वी हैव हारून रशीद फ्रॉम न्यू दिल्ली। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मैं एक्चुअली PhD रिसर्च स्कॉलर हुआ एम्स में जी। बहुत अच्छी। तो अभी आपका प्रोग्राम बहुत टाइम से, जब से शुरू हुआ है तब से देख रहा हूँ जी। वी अप्रिशिएट दैट जस्ट। हाँ, तो एक क्वेश्चन है मुझे गुलजार अहमद सर से, प्लीज। सर ने अभी बोला कि हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्योमेट्रिक फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी हैव क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c is equal to 0, we can convert it into a geometric form. But if the quadratic equation is in negative, for example, it is ax² - bx + c is equal to 0, then how will you convert that minus form into geometric way? How we can write the length in minus form? We can't write length in negative way. वेल शुक्रिया इस सवाल के लिए, और हम अप्रिशिएट करते हैं कि अपने बिजी स्केड्यूल में, क्योंकि PhD वी अप्रिशिएट इट्स अ वेरी बिजी जॉब, बिजी रिसर्च जॉब, एंड डिस्पाइट हैविंग सच अ बिजी स्केड्यूल यू कॉल्ड अस, और इतनी बारीक बीनी से आप हमारा प्रोग्राम देखते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है, गुलजार सर जवाब। आपके सवाल का मैं ऐसे जवाब देना चाहूंगा कि हम हर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ज्योमेट्रिकली फैक्टराइज नहीं कर सकते हैं, और जैसा कि मैंने कहा, इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट, when a discriminant is greater or equal to 0, then definitely the quadratic equation have real linear factors. If a quadratic equation has real linear factors, then and only then can we factorize it geometrically. Otherwise not. Shukriya. Thanks a lot for that breezy answer. We have CL Bhatt from Bengaluru, all the way from Bengaluru. Sir, good morning. A very warm welcome to the program. Hello. Hello, Mr. Bhatt. A very warm welcome to the program, sir. Yeah, good morning, sir. I am CL Bhatt speaking from Bangalore. Yes, sir. Yeah. Very nice to have this conversation on quadratic equations. Actually, I am an ex-student of your school, Magam, higher secondary school, Magam. क्या बात है? Welcome. Yeah. In the year 1968, I have passed my higher secondary from Magam. 1968. Well, जी. It has been quite a long time. Yes. Please convey my congratulations and blessings to Ghulam Ahmad Dar and Abdul Rashid Zargar Sahab. Gulzar Ahmad Dar. Thank you very much. Thank you very much. Thanks a lot for that gesture. Do you have any questions, sir? No. May God bless you. It was a very interesting program on quadratic equations. Thank you. Well, thanks a lot for that wonderful call. And sir, अभी बात हो रही थी कुछ टाइम पहले, ये कह रहे थे कुछ बहुत सारे कॉलर्स की ये भी है कि ऐसा नहीं है कि हर किसी प्रॉब्लम को, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सर, कि हम हर किसी प्रॉब्लम को ज्योमेट्रिकल मेथड से सॉल्व करें या हर किसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को जो है मैथमेटिसाइज करें, ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे कॉलर्स ऐसी कॉल्स कर रहे हैं, और जैसा कि लग रहा है कि कुछ शायद उनमें खुद भी मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। होता अगर कोई मतलब जब बच्चों को हम एक क्वेश्चन दिखाएंगे जो प्रैक्टिकली सॉल्व हो सकता है, उनकी इंटरेस्ट बढ़ जाएगी, उनको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो वो बाद में वहां पर खुद पहुंच जाएंगे। हम जिस तरह हम मसलन HCF और LCM को आम बच्चों को सिखा रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकाल रहे, तो बाद में वो बड़े बड़े क्वेश्चन खुद भी करते हैं। तो बेसिक मकसद है, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बच्चे तक, वो बच्चे अंडरस्टैंड हो जाए, बच्चों को ज्योमेट्रिकली उनको हो जाएंगे, मतलब हो जाएगा, तो फिर बाद में वो बाकी क्वेश्चन अच्छी तरीके से करेंगे। शुक्रिया इस जवाब के लिए। गुलजार अहमद जुड़ चुके हैं हमारे साथ अनंतनाग से। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। सर जी
गुलजार साहब अपना सवाल पूछिए। सर अगर हम लिखते 2 रेज़ पावर 2 हो गया स्क्वायर जी, अगर दूसरा है 2 रेज़ पावर 3 हो गया क्यूब, हाँ, अगर हम 2 रेज़ पावर 4 लिखेंगे तो हम उसको क्या कहेंगे? एक बार फिर से इत्मीनान से पूछिए अपना सवाल। सर तक तो पहुंच गया, लेकिन व्यूअर शायद आपने थोड़ा फास्ट बोल दिया तो व्यूअर समझ नहीं पाएंगे। एक बार आराम से इत्मीनान से पूछ लीजिए फिर से। सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूंगा 2 रेज़ पावर 2 हो गया स्क्वायर, मैं जवाब देना चाहूंगा। जी गुलजार साहब जवाब दीजिए, शुक्रिया। इन्होंने कहा कि हम 2 रेज़ पावर 2 को 2 स्क्वायर बोलते हैं, 2 रेज़ पावर 3 को 2 क्यूब बोलते हैं। सो व्हाट वी से व्हेन इट इज 2 रेज़ पावर 4, कोई ऐसा पर्टिकुलर टर्म इसके लिए नहीं है, हम सिंपली बोलते हैं 2 रेज़ पावर 4। दैट मींस वी हैव टू मल्टीपल 2 4 टाइम्स, और इट इज द इफ इट इज इक्वेशन इट इज द 4th डिग्री। जनरलाइज करके बताएंगे, अगर कोई नंबर है a रेज़्ड पावर x और इस x को हम एक्सपोनेंट कहते हैं या पावर कहते हैं, और a को हम बेस कहते हैं, एंड द टर्म व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ a रेज़्ड पावर x इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल फॉर्म। शुक्रिया जवाब के लिए। डॉक्टर मोहम्मद इकबाल भट्ट साहब जुड़ चुके हैं हमारे साथ बांडीपुरा से। इससे पहले कि मैं इन तक आऊं, मेरी इस्तदा है सभी कॉलर्स की, जब भी वो कॉल करें अपने टेलीविजन सेट्स का वॉल्यूम बराहे करम कम कर दे, ताकि आप जो कहे वो ठीक तरीके से हम तक पहुंचे। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैर मकदम, आपका प्रोग्राम है, अपना सवाल पूछिए सर। मुझे एक्चुअली इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा कुछ कहना है कि मुझे ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, एंड आई एम ऑफ फर्म बिलीफ अगर इस टाइप के प्रोग्राम आप जैसे कि आपने व्यूअर्स के लिए प्रोग्राम आज किया है, तो जिस तरह से टीचर ने ये अच्छी तरह से इसको समझाया इसमें प्रेजेंटेशन में जी, तो अगर इसी तरह बाकी जो टीचर्स हैं हमारे क्लासरूम्स में ठीक इसी तरह वो प्रेजेंट करें, तो मुझे नहीं लग रहा कि जो मैथ फोबिया है हमारी जनरेशन में, यंग जनरेशन में है, वो इस टाइप रहे कि लोग फिर कतराएंगे मैथमेटिक्स को हायर स्टडीज में चूज करने से। तो मैं डार साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छी तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे उन्होंने समझाया बच्चों को। एक चीज मुझे लगी कि जो डार साहब ने जब कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे कि जब रूट्स इमेजिनरी आएंगे, तो मैं ये चाहता कि डार साहब अगर थोड़ा सा उधर उनको बताते कि जब हमें कोई जैसे कि हम एक इक्वेशन सॉल्व करेंगे x² + 1 = 0 विच इज ऑफ क्वाड्रेटिक नेचर, तो थोड़ा सा वहाँ वो बता सकते हैं उन बच्चों को कि अगर हम स्क्वायर को फिर ट्रांसफर करें उधर, तो ताकि लोगों को, स्टूडेंट्स को ये पता चलता है कि इमेजिनरी रूट भी आ सकता है। बाय एंड लार्ज द प्रेजेंटेशन वाज वंडरफुल एंड डेमोंस्ट्रेशन वाज very nice. We really appreciate your gesture, Dr. Mohammed Iqbal Bhatt. Yes, sir. One thing here, when discriminant is less than 0, there are always imaginary roots. In complex roots में real भी आते हैं imaginary. There are always imaginary roots and not real roots. When discriminant is less than 0. इनका कहना है कि आपको टच करना चाहिए था। सही कहा आपने। जब कॉम्प्लेक्स रूट्स की बात करते हैं, since it is not mentioned in the syllabus of 10th class, so I didn't mention it here. गुलजार साहब, और एक और अहम बात जो उन्होंने की ना, उन्होंने कहा कि जैसे यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन होता है एक लेक्चर का, ऐसा जिस दिन हर स्कूल के वादी के, चाहे आप नॉर्थ कश्मीर की बात करें, आप साउथ कश्मीर की बात करें, सेंट्रल कश्मीर की बात करें, हमारी वादी के हर स्कूल में ऐसे ही लेक्चर्स, क्वालिटी लेक्चर्स डिलीवर होने चाहिए, तब हम समझेंगे कि हम अपने मकसद में कामयाब हुए। We really appreciate this gesture. मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, इत्तेफाक करूंगा। कोशिश करनी चाहिए हम जो टीचर हैं मेहनत के साथ पढ़ाएं, कोशिश करें कि हम अपनी सारी जो सलाहियतें हैं बरोई कार ला के ही बच्चों को पढ़ाएं, तभी हम फ्रूटफुल। एक बात मुझे मैं यहाँ ऐड करूँ, मुझे तजुर्बा हुआ वैसे जोनल एजुकेशन अफसर, मैं पिछले 5-7 साल से काम कर रहा हूँ। मैं डिफरेंट स्कूल्स में गया तो मैंने वहाँ पाया ये जो टीचर्स है वो खुद मैथमेटिक्स कॉन्सेप्ट से बाखबर नहीं है। यही वजह है कि बच्चों को वो अच्छी तरह नहीं समझा। मैंने इसलिए ये कोशिश भी की है, मैंने पिछली बार भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स टीचरों के इसरार पर निकाली है, और अब भी दूसरी किताब ये मैथमेटिक्स लर्निंग जो पब्लिश की है मैंने, वो 1 हफ्ते के अंदर बात, ताकि टीचरों को पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाए। जब उनको खुद जो कॉन्सेप्ट किसी आदमी किसी टीचर को खुद समझना आए, तब वो दूसरे को कहाँ सिखाएगा। जी बिल्कुल सही बात है। और आपकी किताब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स और आपकी आने वाली किताब जो है मैथमेटिक्स लर्निंग, उसमें भी आएंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, अबरार हुसैन अशमुकाम से। अस्सलाम वालेकुम अबरार साहब, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। वालेकुम अस्सलाम, आप ठीक हो? जी बिल्कुल बखैर वाफियत, आप अपने हवाल सुनाइए। वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम एक्चुअली हाईली थैंकफुल
I am actually highly thankful to Doordarshan team by conducting such type of programs. They are really great programs, wonderful programs. They are increasing the knowledge of students, caliber of students regarding the particular subject. जी जी बिल्कुल सही बात है और we really appreciate your gestures sir. Do you have any question to ask to the expert or the teacher? No, I am not actually related to mathematics. For that purpose, no questions. Well, thanks a lot for that wonderful call, sir. जी सर, आपकी आने वाली किताब जो है मैथमेटिक्स लर्निंग, इसके बारे में कुछ बताइए। वो उसमें मैंने पहली जो किताब निकाली थी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथ्स, वो इतनी चली बाजार में कि बाद में अब मुझे टीचर्स ही अक्सर कॉल कर रहे हैं कि हमें किताब चाहिए, लेकिन मेरे पास नहीं है। अब दूसरी किताब, पहली किताब थी उसमें जो सिलेबस था वो 6 to 8 तक था, मिडिल क्लासों के लिए, क्योंकि मैं जोनल एजुकेशन अफसर था, मैंने वहीं प्रॉब्लम देखी स्कूल में, उन्हीं की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए निकाली। अब मुझे हौसला अफजाई हुई, कुछ मैथमेटिक्स, मुझे अपने टीचर थे मैथमेटिक्स टीचर जिनमें एसपी कॉलेज का रिटायर्ड प्रिंसिपल बशीर अहमद वानी साहब है, या डाइट प्रिंसिपल वो एजाज कलंदर साहब, उसने मुझे इनकरेज किया और कहा कि आप इसको सीनियर सेकेंडरी लेवल तक लीजिए। अब दूसरी किताब जो निकाली है वो सेकेंडरी लेवल और सीनियर सेकेंडरी सब सिलेबस कवर कर रही है। यू डिजर्व ऑल द कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट बुक। वी हैव इदरीस अहमद वानी फ्रॉम बांडीपुरा। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इदरीस साहब। मैं बांडीपुरा से इदरीस अहमद वानी बोल रहा हूँ जी। मैं मशकूर हूँ डीडी कशिर का, जिन्होंने ये प्रोग्राम चलाया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होते हैं आपके यहाँ दूरदर्शन से। जी, डू हैव एनी क्वेश्चन? वी अप्रिशिएट योर जेस्चर। क्वेश्चन जो इन्होंने अभी कहा, लेक्चरर साहब जो बैठे हैं, इन्होंने कहा कि बहुत सारे मेथड्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के। जी। उनमें एक मेथड उन्होंने कहा लिल्स मेथड। जी। मैं जानना चाहता हूँ इनसे कि एक तो ये रियल रूट निकाल सकते हैं हम लिल्स मेथड से, क्या हम जो इमेजिनरी रूट्स होंगे किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्या हम लिल्स मेथड से वो फाइंड कर सकते हैं इमेजिनरी रूट्स? जी शुक्रिया इस खूबसूरत से, तो मुझे बताइए कि थोड़ा उसमें डिटेल बताइए लेक्चरर साहब। शुक्रिया इस खूबसूरत से सवाल के लिए और हमारा प्रोग्राम इतनी बारीक बीनी से देखने के लिए। टाइम हमारे पास बहुत कम है जी। लिल्स मेथड, आपके सवाल का सीधे मैं जवाब दूंगा नहीं, क्योंकि हम लिल्स मेथड से तभी रूट्स निकाल सकते हैं जब ये टच करते हैं इस BC को, और हम लेते हैं रूट्स bx1 डिवाइड बाई ba एंड सेकंड रूट वी टेक bx2 डिवाइड बाई ab। जब ये BC को टच ही नहीं करते हैं तो हम कॉम्प्लेक्स रूट्स नहीं निकाल पाएंगे लिल्स मेथड से। चलिए शुक्रिया जवाब के लिए। हमारे प्रथम श्रेणी के कॉलर MK भट्ट जी दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं। सर गुड मॉर्निंग। अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर दीजिए भट्ट साहब। So nice of you, so nice of you. Good morning to everybody. Good morning to you as well. Good morning, good morning. I have to accept your suggestion. I have done it. I think from the body language, 5 minute lecture देखा. I was away from the time being, but I saw only 5 minutes lecture of this young teacher. But I thought in 5 minutes I could not elaborate what he has spoken, but by his body language and by his actions and his speech, this is a best satisfactory lecturing is you. Well, thanks a lot for that compliment. Thanks a lot for that compliment. You are the best, being a youngster playing the rings. And I think that he has given a good lecture. I give a kudos. This is the way of teaching the class. Thank you to you teacher. Well, we appreciate your gesture. Thanks a lot for calling us, sir. काफी ज्यादा compliments आपको मिल रहे हैं. As I said in the start of the program that you're a wonderful communicator. और ऐसे communicators चाहिए हमें, चाहे मिडिल स्कूल की बात हम करें, सेकेंडरी स्कूल की बात करें, सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करें, वी नीड सच कम्युनिकेटर्स, क्योंकि जब ऐसे कम्युनिकेटर्स होंगे तभी हमारे स्कूल का सिस्टम जो है वो डेफिनेटली इंप्रूव होगा। एक ईमेल में पढ़ लेता हूं, परवेज अलाई साहब ने लिखा है, कुंड एरिया डिस्ट्रिक्ट कुलगाम से, रेगुलर व्यूअर ऑफ योर प्रोग्राम एंड योर एफर्ट्स इज अ मूव टुवर्ड्स डिजिटलाइजेशन, पीपल आर बेनिफिटेड अ लॉट, इट्स एजुकेशन इन होम। थैंक्स अ लॉट फॉर दैट वंडरफुल ईमेल। और शुक्रिया गुलजार अहमद डार साहब इस वंडरफुल बेटर कम्युनिकेटिव लेक्चर के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे एक्सपर्ट सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग बुक। Haya, repeat telecast. Yeah, friends, the program will have its repeat telecast on Tuesday evening from 9 to 10 p.m. and on Thursday in the morning from 9:10 a.m. to 10:10 a.m. तो इसी दुआ के साथ कि नाजरीन आप जो भी करें अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी से हमकनार करे। दीजिए अपने मेजबान जमशेद रसूल और हया को आज के प्रोग्राम से इजाजत। अल्लाह हाफिज़।